Good evening, everyone. Am I audible? Yeah, good evening, Yes. doctor. Yeah. You're Good audible. evening, everyone. Thank you for joining this session. Good evening, sir. Good evening. So, I'm a geriatric medicine consultant. So, this geriatric medicine is a relatively newer medical subspecialty where uh, we specialize in treating elderly patients, just like a pediatrician does for children. So one of the core important things which we face, or one of the common problems which we face in our patients, is forgetfulness. A lot of it causes a lot of anxiety in caregivers and to the patient as well. So let's see what we can do to better understand what is dementia, what is forgetfulness, and how we can prevent us from developing dementia later in life. So I'll start with a case which I just last month I encountered. So a 68-year-old female who is a retired teacher was brought by her daughter who lives in USA. She was visiting India and she notices that her mom is forgetting things, especially conversations that happens at home in the previous days, whatever conversation is happening. She's forgetting what were the content of those conversations. She has difficulty in telling name of few objects. Otherwise, when they ask her something of distant past, she remembers. Now, according to the patient, her memory is fine. And these are just age-related decline. So question arises, when is forgetfulness age-related and when it becomes start of a pathological process called dementia? So our topic today will deal in this simple question and complex question rather. So what is dementia? So dementia is basically an acquired deterioration of cognitive abilities that would disrupt the activities of daily living. Now, what are the activities of daily living? Activities of daily living include bathing, clothing, uh, going to washroom, feeding, sleeping, mobility, and all that. Now, forgetfulness can start in a lot of patients. Even younger generation people can forget some things occasionally or sometimes. But if this forgetfulness or if this cognitive decline is hampering your day-to-day activities or is interfering with your activities of daily living, which I mentioned, then we call this as dementia. Now, when we talk about dementia, now dementia is very prevalent. And then as we know, when we got independence, our life expectancy was around 35 years. Over the years now, our life expectancy is around 70 years. And dementia is one of the risk factors for dementia is increasing age. So it is a problem coming to age because our life expectancy is increasing. More number of people will be facing this challenge. डॉक्टर As, साहब yes. थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलिए ना सर, पूरा इंग्लिश ही बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा थोड़ा हिंदी में भी हिंदी बोलना आई थॉट साउथ इंडिया के भी लोग हैं सो विल दे बी अंडरस्टैंडिंग coordinators okay I'll try to mix it up. So basically by 2020 there were 50 million people worldwide of dementia and 2020 तक आते आते इंडिया में 5.3 मिलियन पीपल डिमेंशिया के थे और ये एस्टिमेट है कि 2030 तक ये 7.6 मिलियन तक हो जाएगा. तो एज वी कैन सी नंबर्स बढ़ रहे हैं वो पॉपुलेशन के जिनको डिमेंशिया है. अब जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अल्जाइमर्स डिजीज का नाम सुने होंगे. अल्जाइमर्स डिजीज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, बट डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है. डिमेंशिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं. जैसा कि आप सबने सुना होगा किसी को स्ट्रोक हो गया और उसके बाद No, I उसकी can understand Hindi. यस Talk in English. Please talk in English. इंग्लिश ना दैट्स व्हाट आई थॉट एक बोलते हिंदी में बोल, एक बोलते इंग्लिश में बोल. हिंदी का इंग्लिश. ऐश्वर्या Sukoon. Old people Yes, say sir. hi. Sir, we can use both, sir. But both is Whenever difficult for possible. me. I think I will choose to talk in English only. Difficult to mix it up.
Some people will not understand, no, then. Okay, sir. If anything is important. If anything doubt, I can talk in Hindi in that particular type Okay, sir. thing. Okay. And if anything important, you can speak in Hindi also, sir. Okay, sure. So Thank you, sir. dementia basically is a broader term. It's an umbrella term. So dementia can be due to multiple things. Alzheimer's disease is the most common cause. Around 60% cases of dementia is due to Alzheimer's disease. But when we talk about it, as you might have heard, some patient developed stroke and then they develop forgetfulness. That is due to stroke-related dementia. Some patients with Parkinson's later on develop dementia. That is due to Parkinson's disease dementia. So there are different subtypes, and it is important to classify what kind of dementia one patient is having. Now, this slide is just telling us, although the symptoms for dementia might start at the age of 70 years, the pathological process in our brain starts much earlier. So whatever changes in our brain which leads to dementia starts way early. So it is very important that we start those preventive strategies which I will discuss very early in life to prevent ourselves from developing dementia later in life. When we talk about dementia, there is a spectrum. So there is a preclinical phase. In this, there is pathological changes in our brain, but per se, patient is not having any symptoms of dementia. There is no forgetfulness, is working fine. But as the disease progresses, as the pathology in our brain progresses, patients start having these mild symptoms of forgetfulness, which is occurring more frequently. And when we test these patients, their memory scores will be down. But still, they will be able to maintain their activities of daily living. But we call it dementia when there is a problem with forgetfulness. The memory scores are also low, and patient is not able to now maintain his activities of daily living. This we call as dementia. Now this is a very important slide which I want everybody to focus. So what are the early symptoms or signs of dementia which everybody should know? And if you are having any of these symptoms or one or more of these symptoms, you should seek medical help or get your memory checked. So this includes memory changes, like I talked, which disrupts daily life, which is occurring on a day-to-day basis and not infrequently. There is a problem there is challenges in planning or solving problems. There's a difficulty completing familiar tasks at home, work or leisure, like tasks which you earlier used to do, like a simple thing such as making tea is very easy. You have made it all through the years. But now when you're making tea, you're feeling confused. What should come before tea, whether I should put some tea masala or not or something, whatever. A simple task which you earlier used to do, or now you're facing confusion in that task. Whether there is any confusion with time or place, whether there is trouble understanding visual images, spatial relationships. Some patients might have confusion which is the right path to their home, especially if they are living at that place for a longer time. But still, if they are getting these confusions, these can be early symptoms of dementia. डॉक्टर आकाश, इफ यू डोंट माइंड, आप हिंदी में भी बात कर सकेंगे प्लीज? Hindi, English, दोनों, it's very difficult to say both. हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर आप बता सके. Okay, sure. I will try to talk this in Hindi, English both. So early symptoms, what we are discussing here, what are the early symptoms of dementia? So अगर memory complaints जो हमें हो रहा है वो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है और हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, या कोई हमें चैलेंज हो रहा है, अगर हमसे कोई टास्क बोले कोई करने के लिए, उसको प्लान करने में या उसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत आए, क्योंकि सिंपल टास्क हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस कपड़े को फोल्ड करके कहीं पे रखना है, 2 स्टेप टास्क है, बट वो करने में आपको प्रॉब्लम आने लगे, या पहले आप जो काम अच्छे से कर लेते थे, फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिश बनाना है जो पहले आप बहुत इजीली कर लेते थे, बट उसको करने में अब उनके स्टेप्स में आपको कंफ्यूजन महसूस हो रहा है, या आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ, आज टाइम क्या है, आज डेट क्या है, व्हाट इज दिस प्लेस। अगर इनमें कंफ्यूजन हो रहा है, अगर
विजुअल इमेजेस या स्पेशल रिलेशनशिप को समझने में दिक्कत हो रही है, घर का रास्ता पता करने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे वो रिटर्न प्रॉब्लम हो, कोई सम हो, कोई रिटर्न चीज हो, उसको पढ़ने या समझने में दिक्कत हो रही हो, डिफिकल्टी इन वर्ड फाइंडिंग और राइटिंग, मिसप्लेसिंग थिंग्स और लूजिंग द एबिलिटी टू रिट्रेस स्टेप्स। मान लो आपने कहीं कोई सामान रखा और भूल गए और उसको सोच भी नहीं पा रहे हो आपकी कहाँ कहाँ मैं रख सकती हूँ या कहाँ रखा होगा, पुअर जजमेंट होना, डिक्रीज और पुअर जजमेंट, विड्रॉल फ्रॉम सोशल और लाइक विड्रॉ हो जाना, मतलब पहले आप बहुत सोशल थे बट अब आपका मन नहीं कर रहा है सोशल रहने का, आपको मन कर रहा है आप अकेले रहो, या आपको इमोशंस नहीं आ रहे हैं, पहले जो हाईज एंड लोज इमोशंस के होते थे वो नहीं आ रहा है, या पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन पर्सनालिटी, ऑल दिस कैन बी अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। सो ट्राई टू save this slide or take photographs of this slide. If anyone around you or you are having one or two of these symptoms and it is occurring, ये बार बार हो रहा है, इनमें से एक से या दो से सिम्टम्स आपको बार बार फेस करने पड़ रहे हैं, तो एक बार मेमोरी चेक करा लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं दैट whatever cognitive decline या जो भी उनकी मेमोरी घट रही है एज रिलेटेड है, ये डिमेंशिया नहीं है। तो अब हम उनको क्या समझाते हैं कि ये डिमेंशिया कब है। हमने इसमें बात भी किया कि अगर ये रेगुलर बेसिस पे होता है, इफ इट इज अकरिंग एट अ रेगुलर इंटरवल, जनरली इट सजेस्ट दैट इट माइट बी डिमेंशिया। अगर उनको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है कि वो कहाँ पे हैं, यहाँ कैसे आए, आज दिन क्या है, आज मंथ क्या है, मौसम क्या है, अगर ऐसे कंफ्यूजन्स होते हैं तो भी ये डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी हमने पिछले स्लाइड में बात किया था। जब हम डिमेंशिया, व्हेन वी टॉक अबाउट डिमेंशिया, व्हाट चेंजेस हैपन इन द ब्रेन, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ब्रेन में, अगर आप देखेंगे तो हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन का एरिया होता है हमारे कान के ऊपर के साइड, टेम्पोरल एरिया ऑफ आवर ब्रेन, देयर इज अ हिप्पोकैम्पस। ये हमारी मेमोरी और उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, एज आवर एज प्रोग्रेसेस, देयर इज अ डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ हिप्पोकैम्पस। ऑल्सो ब्रेन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेन में भी मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, तो the waste products of our brain metabolism gets accumulated in the brain over the years, और ये accumulation जब एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं तो हमें डिमेंशिया या उससे जरूर जुड़े सिम्टम्स होने लगते हैं। इनको हम एमाइलॉइड प्लाक्स बोलते हैं। अब एमाइलॉइड प्लाक्स हमारे ब्रेन में बनते हैं और निकल जाते हैं। अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं हमें, जो कि हम आगे बात करेंगे, उन कंडीशंस में ये ब्रेन से निकलने कम हो जाते हैं। तो अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो हमारे ब्रेन में एमाइलॉइड प्लाक का डिपोजिशन कम होगा। Now coming to the important section of our today's talk, prevention. Dr. Akash, let's take 1 minute and just see if everyone has Yeah, sure. understood and anyone has questions. Everyone? Anyone has any questions Do I right see now? the chat box now or in the end? No, in the end. If there's anything, I'll let you know. Okay, Doctor, can I ask some question? sure. Okay, just as a test, last 5 days back, what breakfast did you have? Will a normal person be able to answer? 5 days before, What is the breakfast you had last Saturday? Yeah, some people might not. So is it coming under a dementia or Alzheimer or anything of that sort? No. So for dementia, basically, if you are forgetting like, see, having breakfast is a very routine thing. You take different breakfast on different days. Okay. So if I ask you, please recall whatever you have in the last 7 days, some people might recall 5 days rightly, but not the 2 days. Okay, but we don't call it dementia. Dementia is when there is one subjective feeling that yes, you're forgetting like what you had just a prior day. I think if you'll ask 10 people, normal people, what they had yesterday, they will be able to tell. But a patient who is having dementia will not be able to tell even just 24 hours before what she had. Or even if we ask in the lunch time what they had for breakfast, they will not be able to tell. So yes, going 5 days, 7 days back, a lot of people will have problem in recalling everything.
but that does not mean they have dementia. It is the immediate thing, or even the relatives are noticing that they are asking, like we sat, matlab, family sat in the night over dinner table, they talked about something, but now today morning the patient is forgetting what they talked or what they decided, or some conclusion was made of that decision or not. So this is something which you feel, and not just once. It is happening, like not just once it has happened. It is happening on a frequent interval. Then we say that yes, you might have dementia. No harm in getting your memory checked. Doctor, can I ask a question? Sure. So, doctor, if let's say you have gone for a holiday about a year back, Okay. right? Now you remember that you've gone to a place for a holiday, right? Yeah. But you can't recall a lot of places that you've seen during that holiday. Yeah, But sure. when you see the photographs, you're able to recall it. Mm-hmm. Now, does that No. So remain? again, I'm saying even as we age, there is some changes, some cognitive decline which happens with age. As I as I've shown an image of brain. So there is some gradual decline in the brain cortex, hippocampus volume, which happens with age. It is only when it is more than that, what is expected of even age-related decline, then it becomes a problem. Now, recalling even 1 year back, I went to Puri, even I can't recall everything. That does not mean I have dementia. It is, again, I'm telling, when you are in a household, you're living with your family members, and they are feeling like very recent talks you're forgetting, and even yourself, you are getting a feeling that you're misplacing things very frequently, or you are having difficulty in naming few objects, or you have difficulty naming few individuals. It is then it falls, yes, you may have some red flag signs for dementia and you should get yourself checked. 1 year back, a lot of people, even a younger generation people who are using a lot of mobile and all the social media, are having brain rot. So even their cognitive decline is even faster than the older generation. So even they might not be able to tell all the places they went a year back. Okay. No, the reason is because I can Mhm. recollect, you asked me something about 15 years back, or 20 years back, I could even tell, well, this is the flight or this is Yeah, the train, yeah. whatever, the mode of journey, the hotel Mhm. name. I could remember everything of that. But if you ask me something a year back, then I struggle. Yeah. So see, one of the things which happen is new memory formation is what is impaired in both age-related decline, like new memory formation, and even in Alzheimer's disease, if you see a typical history, even the case which I showed, the lady which I saw 1 month back was having problem in new memory formation. She is having problem in what was discussed yesterday or a week ago. But if you ask such patients when was their child was born, where he was born, what all function was happened that day, they remember that. So distant memory or remote memory, we call it, is usually intact in both age-related cognitive decline and Alzheimer's disease. It is only the recent memory or the new memory formation which is impaired first. Even distant memory will diminish if dementia will progress and it is severe, but it will take time. But the first symptoms are usually the recent memory formation or the recent memory which is getting impaired. So yes, so this is a thing which happens because our hippocampus and other brain area declines, volume declines. So new memory formation is impaired. That's why this happens. What you're telling is actually what happens with age-related decline and also in Alzheimer's disease. Any other questions? So basically we talked till now is what is dementia? What are the early symptoms? I think I discussed both in English and Hindi. What are the early symptoms of dementia? And
what is age related and what is not age related, and I think I cleared some questions that yes, in both dementia and age related decline, new memory formation is what is impaired more. Remote memory, like very past memory of 10-20 years, might be intact, and this gives a false sense of comfort to the patient that yes, they are remembering very old things also, they don't have dementia. But this is not how it happens. Alzheimer's disease, or even in age-related cognitive decline, recent memory is first impaired, and these are the early signs or symptoms, so should not be ignored, even if your remote memory is intact. So now we'll come to the important part of our discussion, prevention. So we discussed how prevalence of dementia is increasing, what are the early signs, what are the preclinical stage, mild cognitive impairment and dementia, but how we prevent it. So one of the important thing which we discuss, not prevention, rather treatment of dementia, is there are some reversible causes, some reversible medical conditions, which may lead you to believe that you have dementia or you have forgetfulness, or it causes similar symptoms. So one of these is thyroid disorders, both hypo and hyperthyroid. थायराइड का ज्यादा होना कम होना दोनों से डिमेंशिया हो सकता है. विटामिन B12 की डिफिशियंसी, तो B12 डिफिशियंसी इज मोर कॉमन इन वेजिटेरियंस. तो जो वेजिटेरियन है उनमें B12 कम होता है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में B12 कम होता है. B12 deficiency presents as forgetfulness, low mood, fatigue, all these symptoms होते हैं इनके. नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस होता है, गेट में इम्बैलेंस होता है, चलने में दिक्कत होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, बार बार यूरिन आता है और कई बार यूरिन लीक हो जाता है. तो ये ट्रायड होता है इन तीन चीजों का. इसको ब्रेन की इमेजिंग में ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं. अगर ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से हिमेटोमा बन जाए, उसमें भी ऐसे डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं. क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई भी शरीर में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए, अगर वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसके वजह से भी डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं. ब्रेन की ट्यूमर में भी ऑब्वियसली डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं. ड्रग्स, खास करके स्लीपिंग मेडिसिन, न्यूरो की बहुत सारी मेडिसिन जिसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि प्रीगैबलिन, आपकी नींद की दवाई है अल्प्राजोलम, एल्ट्रैक्स, क्लोनाजेपैम, इन सब में डिमेंशिया का रिस्क रहता है. और एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है इंसेफेलोपैथी, जिसमें भी ऐसा हो सकता है. नाउ ऑल these symptoms, all these medical conditions are curable or to an extent controllable. इनको कंट्रोल करते हैं तो डिमेंशिया पे हम कंट्रोल कर सकते हैं या डिमेंशिया को ठीक कर सकते हैं, अगर इसके वजह से डिमेंशिया हो रहा होगा तो. अब हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या है डिमेंशिया के. तो डिमेंशिया के जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो डिमेंशिया के कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है, जिन पे हमारा कोई बस नहीं है, विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, हमने बात किया ब्रेन के बाई प्रोडक्ट्स आपके ब्रेन में डिपॉजिट होंगे, और जैसे जैसे वो डिपॉजिट होंगे एक लेवल के बाद आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स हो सकते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ म्यूटेशंस होते हैं ApoE4 जिनमें ये म्यूटेशन पाया जाता है, प्रीसेनिलिन, ये म्यूटेशंस जिनमें होते हैं उनमें भी डिमेंशिया होने का रिस्क ज्यादा होता है. ये लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. और ये रिस्क फैक्टर्स को अर्ली लाइफ, मिड लाइफ और लेटर लाइफ में डिवाइड किया गया है. अर्ली लाइफ में हम ऐसा क्या करें, हम तो नहीं कर सकते, हमारा अर्ली लाइफ बीत चुका है, बट हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर वो ज़्यादा लंबा एजुकेशन लेते हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है, तो आगे ऐसा देखा गया है कि आगे जाके उनको डिमेंशिया होने का रिस्क कम होता है. इसी तरह से ये देखा गया है जो लोग ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं, जिनको ज़्यादा लैंग्वेज बोलने आता है, उनमें भी डिमेंशिया होने का रिस्क कम रहता है. मिड लाइफ की बात करते हैं. मिड लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है या हियरिंग लॉस है, उनमें डिमेंशिया होने का रिस्क ज्यादा होता है. हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के लिए तो बुरा है, ब्रेन के लिए भी बुरा है, मेमोरी के लिए भी बुरा है. मिड लाइफ में डिप्रेशन जिनको होता है, उनमें भी डिमेंशिया होने का रिस्क ज्यादा होता है. जो बॉक्सर्स होते हैं, ऐसा देखा गया, जो बॉक्सर्स होते हैं जिनको रिकरेंट हेड ट्रॉमा होता है,
उनमें डिमेंशिया ज्यादा पाया जाता था। तो इससे ये पता चला कि ट्रॉमेटिक इंजरी अगर बार बार आपके ब्रेन में होती है तो भी डिमेंशिया की रिस्क ज्यादा होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनमें भी डिमेंशिया का रिस्क ज्यादा होता है। डायबिटीज हार्ट के लिए भी नहीं अच्छा, हमारी बॉडी के किसी भी चीज के लिए नहीं अच्छा, इवन डिमेंशिया का रिस्क भी बढ़ाता है। स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल लेना मेमोरी के लिए भी हानिकारक है। हाई ब्लड प्रेशर होना, ओबेसिटी होना भी डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जब हम लेटर लाइफ की बात करते हैं यानी 60 साल के बाद, अनकरेक्टेड विजुअल इंपेयरमेंट, अगर आपका आई विजन ठीक नहीं है और उसको करेक्ट नहीं किया गया है, ये भी डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है। सोशल आइसोलेशन, खास करके इस एज में जहाँ ज्यादातर पेरेंट्स के बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं या किसी और सिटी में रह रहे हैं या उनके स्पाउस भी नहीं है, प्लस वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। सोशल आइसोलेशन इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। इसी तरह से एयर पोल्यूशन, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं दे नो इवन दे आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर डिमेंशिया। तो ये सारे वैसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप किसी न किसी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर या तो खुद से भी कर सकते हैं। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप स्मोकिंग अल्कोहल बंद कर सकते हैं, आप अपने विजन को ठीक रख सकते हैं, आप एयर पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसी जगहों पे शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन कम हो, और सोशल आइसोलेशन को कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कम करके आप डिमेंशिया के रिस्क को इवन लेटर लाइफ में भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी टॉक अ लॉट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। ब्रेन हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है 30 मिनट्स वॉक करना डेली फॉर 5 days अ वीक, सबको पता है, सब कोई फॉलो भी करता है। बट क्या हम कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज या ब्रेन के एक्सरसाइज की बात करते हैं? ब्रेन भी उतना ही जरूरी है जितना हार्ट जरूरी है। तो क्या कोई कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस करता है? जितने लोग यहाँ पे हैं इनमें से कोई भी इनमें से कोई चीजें करते हैं? डू एनी ऑफ यू प्रैक्टिस एनी कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस? No, at least I don't do. ओके, I एनीबडी? solve crosswords and puzzles. ओके, वेरी गुड। Yeah, I also do But that. Crosswords, puzzles, word games. ओके, वेरी गुड। Yeah. doctor, ठीक है, doctor, few of I you are do quiz. I do quizzes every week, and I very do good, sir, storytellings. very good. Doctor, So Doctor, I'm sorry that I joined slightly late because I got the link slightly later. That is the okay, reason for which a major part of the initial discussion I've just missed out. Okay. okay, So okay, whatever the things that I'm sorry that I'm just interrupting in between, for which I may be apologize. no I, issues, sir. no, sure, right? See, I'm calling from Calcutta only. In fact, whatever the things so far I have been able to catch up from you is this: one is the vitamin B12 deficiency one. Second is Yes, the people with the hearing problem. That is second thing. yes, Third, you yes, told about the social isolation. Fourth, you yes, told about the air pollution, yes, alcohol and alcoholism, and smoking, sedative inducement, जी, and cognitive exercises. Right? These are the yes, things which I've been able to summarize so far. I've taken note of that. Now, okay, if I'm allowed to put my case forward to you, is this कि doctor, I don't know whether it is right forum to talk about my individual issues. Is it permitted? Can I talk about that? yeah, I think, sir, it would be better. I'll share my number in the end. You can talk with me Okay, directly later on, okay. one Just to just one. That would be just better. just one two things I will touch on. Okay, One is sure. this kid, vitamin B12. I don't know from where it is. Uh, Hearing problem, I don't have. Social isolation, yes, I've got social isolation. Of course, I've got lots of famous, but I don't mix up that much. That is one. Second, and most two things, last two one. There is the sedative part and the alcoholism. I used to be a boozer like nobody's business. For last 20, 25 years, I have been, I was used to taking liquor at least 375 ml per day, I repeat, Okay, because of whatever you say, because my shortcut to the reality and all, whatever. So that is a different part okay, altogether. And secondly, as of today, as it stands, without any sedative, Alzolem, you refer to that particular medicine also, Alzolem point mm-hmm. 0.5, I need to take 1 tablet per day, to per night evening basically, 1 tablet. 1 tablet per night, 1 tablet per day, to per night evening basically. 1 tablet per night evening basically. 1 tablet per day to per night evening basically. 1 tablet per day to per night evening basically. 1 tablet 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 per night evening basically.
for Okay. which just allows me to give a sleep of about 4 to 5 hours. And this about whatever the other things that you suggested about the social activities and walking, these that those are the things which are more than covered up. I walk 3 to 4 kilometers per day, and I burn about 15 to 1600 calories per day. I follow the 16 hours fasting, and I take a very balanced foods and so on and so forth. So I'm not going into that detail. So already I've taken too much lot of your time. So these are the initial thing. So I want to get to know specifically on this that sedentary part. Alcohol definitely I take once per week as it stands today. Once or twice max to max. And cognitive exercise, if you see, tell that is something Excuse me, can I interrupt? I think yes. all these discussions can be done personally or one-to-one level with the Okay, doctor, not in okay, this forum. I'm sorry to say. okay, madam. Sir, I think it would be better if you can discuss your personal queries with me later on. I'll share my number with in here on the Okay, last slide. okay, We okay, can okay, definitely discuss, and there is a lot to talk about. I think other questions might be solved by my later discussions. So okay, it would be better if we take all the questions in the end. okay, okay. Fair enough. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So I think a few of you are following some cognitive exercises, some form of cognitive exercises. Others are not. So whatever. So idea of this session is that you should give focus to your brain as well as we give to our heart. So we should do cognitive stimulation exercises, whether or not you have any forgetfulness or not, because this will help you in long run. Even if you are having dementia symptoms, it will definitely delay its progression. And if you are not having dementia symptoms, definitely you may not develop dementia also later in life. So it definitely helps whether you have symptoms or not. So it includes memory exercises. So memory exercises is we give some prompts. Say for example, rose. Somebody have to tell a story based on that rose. Or say for example, we give somebody spring season, and they have to tell a story based on that prompt. We have to recall certain activities. What were you doing on this New Year day or that New Year day? A family can sit together or friends could sit together and try to recall. So these are some memory exercises which others can do together. Language and communication, a lot of people said that they play word games, they play crossword puzzles, which is very good. Singing familiar songs, like songs which you know, like a karaoke session can be organized by a group, and they can sing some familiar songs from the yesteryears together. That will help in memory, recalling those songs and memory as well. Problem solving, like sorting activities, like you have to pick all the square cubes together, rectangle ones together, or a similar color one together. So all these multitasking things also helps. So other board games like even a Ludo makes you think, makes you strategize, or a chess for that matter helps you, keeps your memory sharp. So sensory and motor stimulation by clay modeling कर सकते हैं, finger painting. Gardening is also very, if you're into it, if you're learning how to make that particular plant grow, what is best for that, what is not good for that, and if you're following all that, even a gardening can be a very good cognitive stimulation exercise. So now we'll come to the physical activity. I think a lot of you might be physically active because yes, everybody takes care of their heart, everybody takes care of their muscles and physical activity, but physical activity helps your brain as well, helps your memory as well. So it boosts our brain function because by increasing the blood flow and oxygen to the brain, it reduces neurodegeneration. As we talked, amyloid deposition happens in brain. If we exercise, there is more clearance of this amyloid which is deposited in our brain. It enhances neuroplasticity, which improves learning and memory. आपका मूड और स्लीप को भी अच्छा करता है. तो मूड और स्लीप दोनों रिस्क अगर खराब होते हैं तो डिमेंशिया का रिस्क रहता है. तो इन सारे फैक्टर्स से ये आपके मेमोरी को अच्छा करता है. अब अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज सारे लोग करते हैं, बट ये देखा गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा वेट के साथ एक्सरसाइज किया जाए. जरूरी नहीं वो वेट हो, वो बैंड्स भी हो सकते हैं,
वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी एक्सरसाइज कराने वाले लोग हैं उनके साथ भी अगर आप करते हैं तो थोड़ी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट मल्टीफोल्ड है। मूड में भी है, स्लीप में भी है, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज को कम करने में भी है और ब्रेन में भी है। इसके साथ साथ माइंड की एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा और टाइची, इन सब से भी हेल्प होता है। अगेन ये एक्टिविटीज को एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पर वीक 5 डेज एटलीस्ट करना होगा। अगर हम और इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, कॉग्निटिव एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, डाइट की बात करते हैं। डाइट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइंड डाइट। तो माइंड डाइट क्या है? मेडिटेरेनियन एक एरिया है यूरोप में जहाँ के लोग ज़्यादातर फिश बेस्ड डाइट पे रहते थे। एंड ये देखा गया कि वहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं, दे आर लिविंग फॉर लॉन्गर टाइम, एंड उनके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी नहीं हो रही है, डिमेंशिया का इंसिडेंस भी उस एरिया में कम था। तो उनकी डाइट को बहुत स्टडी किया गया, क्या खाते हैं वो, कितने कितने दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। और बहुत सारी स्टडीज में अब ये प्रूव हो चुका है कि जब हम मेडिटेरेनियन एरिया जैसे है, जिनको मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं तो हमारी लॉन्गेविटी भी बढ़ती है और हमारा ब्रेन भी शार्प रहता है। तो क्या होता है मेडिटेरेनियन डाइट में? तो होल ग्रेन्स जो कि हम खाते हैं इंडियन सेटिंग में, होल ग्रेन्स तो खाते हैं, व्हीट हो, बार्ली हो, मेज हो, वी ईट एटलीस्ट 3 times ईच डे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटलीस्ट डेली, एक कोर्स आपका मील में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन वन स्पेशली हो तो बहुत अच्छी बात है। बेरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बेरीज एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक खाना चाहिए आपको। नट्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट एक बार दिन में खाना चाहिए। दाल एवरी डे या एवरी अदर डे खा सकते हैं, हमारे यहाँ तो डेली खाते हैं, इट्स फाइन। प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है खास करके वेजिटेरियन लोगों में। पोल्ट्री और चिकन ट्वाइस अ वीक, फिश एटलीस्ट वंस अ वीक फिश दे ईट। Not these are recommendations. That doesn't mean you have to eat it every week, but these are the some things which might help with your brain, which might help with your longevity. You try to incorporate it. जो वेजिटेरियन है वो बाकी वेजिटेरियन वाले चीज़ों को फॉलो करें इसमें। अल्कोहल और बटर, फैटी फैट्स, आपके रिफाइंड शुगर, इन सबको कट डाउन करना है, फास्ट फूड को कट डाउन करना है। रेड मीट बहुत कम खाते हैं वो, और रेड मीट नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। इन स्टडीज में ये पाया गया है अगर आप इन डाइट को फॉलो करते हैं, आप डिमेंशिया के इंसिडेंस को 53% तक कम कर सकते हैं। सोशल एंगेजमेंट की बात हुई, आप सब इस सुकून प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आई थिंक आप सब बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते होंगे। सुकून जैसा एक जो अरेंजमेंट है वैसा एक बहुत जरूरी है एल्डरली पीपल के लिए, क्योंकि उनमें सोशल आइसोलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोशल आइसोलेशन, खास करके लेट लाइफ में डिप्रेशन होना, नींद कम आना या एंजाइटी होना, ये सारी डिप्रेशन डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है। तो हम क्या क्या करके सोशल एंगेजमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं? हम बुक क्लब्स या ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हम किसी वॉलंटियर वर्क, किसी की पढ़ाने, जैसे एक अभी ऑर्गेनाइजेशन, आई केम अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो एल्डरली लोगों को रिक्रूट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है, कहीं गांव में या कहीं पे बच्चों का भी भला हो जाता है, दे गेट टू लर्न फ्रॉम वेरी वेल लर्न टीचर्स जिनको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है, प्लस एल्डरली के लिए भी एक सेंस ऑफ वो होता है कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, एंड इससे एक सोशल और गैदर बॉन्डिंग भी होती है। तो कुछ वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स से जितना हो सके इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है, कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करनी है, कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं। आज मैं एक अपने एल्डरली पेशेंट को देखा जो पेंटिंग सीख रही है एट द एज ऑफ 78। आई वॉज रियली अमेज्ड बाय हर। तो कुछ आप पेंटिंग सीख सकते हैं लाइफ में, कुछ सिंगिंग सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, गार्डनिंग सीख सकते हैं, कोई सोशल स्पोर्ट्स, योगा साथ में करना, डांसिंग साथ में करना, ऐसी कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल्चरल एंड कम्युनिटी इवेंट्स में जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, वो स्किप ना करें। स्लीप बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को स्लीप के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है स्लीप का क्वालिटी भी कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होता है, और स्लीप का ऑनसेट भी लेट होता है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज होती है स्लीप हाइजीन।
ये चार्ट आपको यही दिखा रहा है. दिस चार्ट इज शोइंग यू हाउ टू मेंटेन स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन की जब हम बात करते हैं, आपका बेड और इंडिविजुअल का एक रिलेशनशिप होता है. यूज योर बेड ओनली व्हेन यू हैव टू स्लीप. Don't use your bed as otherwise, just to read, just to sit. Sit on a sofa, sit on a chair if you have to read. Try to walk for some time after eating the dinner. Then whenever you're feeling like sleeping, try to come to your bed. Try to make a fixed time to sleep. Not like today you're sleeping at 10, tomorrow at 12. You have to make a fixed schedule that yes, at 10 I'll go to bed and by 10:30 I'll try to sleep. Now this you have to do regularly to wire your brain that yes, this is your time to sleep. Brain doesn't work in one day. It takes time for neural wiring. You have to avoid caffeine or any energy drinks post 4 p.m. Avoid taking too much liquids if you are having issues with urinary incontinence. So, and avoid these gadgets, mobiles, any electronic devices post 9, 10 p.m. as all these causes unnecessary stimulation to our brain. So following sleep hygiene is very important. Now, a lot of patients or even here individual would be on any sleeping pills. Now, sleeping pills, if taken for a longer time, makes you addict to that. So it is very difficult to now stop it. But again, taking these for longer time increases the risk of dementia. That is a known fact. So what we can do is try to incorporate all these things and try to see if you can reduce the dose of your medicines or not. So that is what I could suggest for that query. Now screening, as we are discussing the preventive strategies, one of the very important thing is early diagnosis. If we diagnose dementia, then we are having, ಏನೋ hello. ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ. I have So muted. You can continue, Doctor. yeah. So if you are having, so if we are detect dementia early, there are treatment available which slows the progression of dementia. So we are able to act. We are able to incorporate all the preventive strategies which we taught. There are some medicines which we can incorporate. So overall outcome is better. So for screening, even this simple ED8 screening tool, now this can be self-administered, whether you are having these problems or not. It is a 8-question set. You can answer yes or no. If you are having more than 2 yes, it means that you should get your memory checked by a doctor in detail. So you can take photograph of this, you can self-administer yourself this, or any caregiver can do for the patient, whether they are having these issues. If answer to more than 2 question is yes, you may have early symptoms of dementia or dementia, and you should get yourself checked and contact a healthcare provider. So what happens is anosognosia. Anosognosia is a term in which patient thinks they are well, but actually there might be problem. So it is important if say a husband and wife is sitting together and wife thinks that husband is having a problem, but husband thinks that husband doesn't have problem. That does not mean he doesn't have dementia. If your caregiver is having concern or the people you are living with are having concerns that you are having dementia, it's better to get yourself checked. So diagnosis, I won't go much in detail, but yes, we involve brain imaging, either MRI or PET scan, history examination is involved, and some memory testing is involved. There are a lot of tests available. Different centers follow different tests, but in that test, if you're scoring less, that means if you are having dementia. Now coming to the treatment options. So treatment options are many, but none are curative. So these are treatment options. If we give at an early stage, we decrease the progress of dementia. But if a person comes with a very advanced stage of dementia, we give this treatment, then the role is very less or no role is there. So there are few medicines which increase the acetylcholine level in our brain, जिससे हमारी मेमोरी ठीक होती है. कुछ हमारे ब्रेन को एक्सेसिव डैमेज जो एमाइलॉइड डिपोजिशन हो रहा है उससे बचाते हैं, और कुछ नई दवाइयां आई हैं जो एमाइलॉइड जो डिपॉजिट हो रहे हैं हमारे ब्रेन में, एमाइलॉइड विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन आवर ब्रेन, उनको रिमूव करने में भी हेल्प करती है. आप सबने इस टर्म के बारे में शायद सुना होगा, नूट्रॉपिक्स.
नूट्रोपिक्स क्या है? ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ब्रेन की कॉग्निशन या ब्रेन की मेमोरी की पावर को बढ़ाती हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जिसमें से बहुत सारी मार्केटेड भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब भी करेंगे। इनमें से किसी भी दवा का या किसी भी नूट्रोपिक्स का प्रॉपर एविडेंस आज तक नहीं आया है कि हाँ ये बिल्कुल हेल्प करती है, क्लियर कट। कुछ स्टडी शो करते हैं कि हेल्प नहीं करती, कुछ शो करते हैं कि करती है। तो करें क्या अब? तो मैं आपके लिए ये ले आया हूँ, ये 7 ऐसे products है या food है which are rich in these nootropic agents. So if you incorporate these nootropic rich food in your diet, ultimately you are getting the benefit. So you don't have to take different these tablets to get prescribed by doctors. If you are having these foods which are rich in these nootropics, it is more than enough. These includes eggs, blueberries, oily fish, nuts, dark green leafy vegetables, coffee, and dark chocolates. So I think I finished my topic just in time. So my take-home message is we have to take care of the modifiable risk factors, which we discussed: early life, midlife, and in late life. Which important things are hypertension, diabetes control, our cholesterol level should be under control, obesity should be tackled well. We have to beat obesity as well. We have to be physically active. We have to incorporate good diet, Mediterranean diet, somewhat equivalent diet to Mediterranean can be incorporated in our life. We have to maintain proper sleep and social engagement. And apart from physical activity, we have to do cognitive exercises as well. And early screening and diagnosis is very essential.